पाकिस्तान रीजन में पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग का फॉर्मल प्रोग्राम का आगाज़ किया था. सो इट वाज बैक इन 50s 1954. When the IPPF was originated, Begum Saida Waheed, a Pakistani woman who was actually the founder of Fatma Memorial, where I started my, after my military service, I started with them. And she was the vice president. So we started very strong on family planning in the region. Family Planning Association of Pakistan was the first NGO who started working exclusively on family planning, and they started before the government had started its own program. It was unfortunate that the other countries in the region learned from us and were able to, get to where we had planned ourselves to be. There were very potent political factors behind the change that took place after the Ayub Khan years. Pakistan went into a very severe crisis of national disintegration in 1971, followed by a government led by Z.A. Bhutto, which was otherwise very progressive, modernist, forward-looking, though it too had a very authoritarian dimension to it. But unfortunately, it did not prioritize family planning in the manner that the Ayub Khan government had. इन सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए. सो व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स इट, then it happens, and if they don't take it, then it doesn't happen. And I think political will को define करना भी बहुत ज़रूरी है. Coming and talking on events and saying yes, this is a problem, is not political will. Political will उस वक्त आएगी, और एटलीस्ट मैं उस वक्त मानूंगी कि political will आ गई है जब ये टॉपिक हमारे हर इशू की टॉप पे आके बैठेगा. We look at population in silos. It becomes an affair for the population welfare department, not even the health department, whereas majority of the services of the public sectors are coming through the health department, the lady health worker programs, their basic health units, RHC, THQ, DHQs, and the doctors there. Population welfare does a very small component of service delivery. The private sector often is not on the table when we are making these policies around population, sustainable population growth. Unfortunately, in Pakistan, एक perception ये बन गया है कि sexual reproductive health, family planning का जो काम है ना, ये तो NGOs और INGOs का काम है, ये तो donor funded काम है. It has historically been a top-down approach. The idea of building big hospitals or clinics and expecting that these will meet the needs of people, which is exactly the opposite of what should have happened. Because primary health care means starting with the physical conditions in which most people live, adapting healthcare services to the reality of villages, towns, slums, unplanned settlements, and providing those services in consonance with those realities. कोने में एक छोटा सा डिपार्टमेंट, एक छोटी सी क्लिनिक आपने बनाई हुई है जहाँ पे औरत जाए ना जाए आपको नहीं पता, लेकिन जहाँ औरत आ रही है डिलीवरी के लिए, जहाँ औरत आ रही है बच्चा लेके जो बीमार है, जहाँ औरत आ रही है बच्चा लेके उसको टीका लगवाना है, जहाँ न्यूट्रिशन का है जो कि सारे मेल नॉलेज बच्चों पे और वाओ पे काम करे, आप वहाँ अगर फैमिली प्लानिंग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं तो दीज आर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़. Because if a newly married couple or a couple which wanted to think of family planning went to a normal government hospital, there would be no advisory services. When it becomes a problem of a nationwide problem, a crisis of the country, then government has to play a role of bringing in all stakeholders in the center and telling them, mandating them to work on that. क्योंकि मार्केट की शेपिंग उसी वक्त होगी जब प्राइवेट सेक्टर, फॉर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर इस सेक्टर में आएगा, इस चीज़ में काम करना शुरू करेगा. गवर्नमेंट का काम होना चाहिए उसके बाद रेगुलेट करें कि प्राइवेट सेक्टर सही तरीके से काम कर रहा है, क्वैक्स तो नहीं है,
सही चीज़ें हो रही हैं, रेगुलेटरी काम करें, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएं। अगर लोकल प्रोडक्शन किसी चीज़ की हो सकती है तो इन्वायरमेंट बिल्ड करें कि कोई लोकल प्रोडक्शन आकर के करे, सबको इकट्ठा करें। गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कोलैबोरेशन का। We have grown up listening to this framing कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, और somehow it stayed with us. अब उस पर बहुत डिबेट की जाती है, as a qualifier, does it? It's not a good slogan, but it was a powerful slogan. The reason why बच्चे दो ही अच्छे did not prove to be ultimately very persuasive or effective was the lack of cohesion between what was being said and what was available on the ground in terms of actual health services. Our narrative was very restricted. It did not sensitize the policymakers. It was somewhat dictatorial to tell people that you should have 2 children. बच्चे दो ही अच्छे. माने someone else is telling you you should have 2 children. तो 90s में जब सोशल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुआ, PSI ने यहाँ पे ग्रीन स्टार को लॉन्च किया, और फ्यूचर्स ग्रुप था, उन्होंने की सोशल मार्केटिंग, दोनों साथ आए थे। एंड ऑफ कोर्स ग्रीन स्टार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और बहुत इस्टेब्लिश्ड है, इट्स अ वेरी इस्टेब्लिश्ड ओन एंटिटी। दैट वाज अ गेम चेंजर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर साइड कि आपने सोशल मार्केटिंग की, आपने उसकी मार्केटिंग की, यू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स, यू मेक पीपल अवेयर of that, and that was कि हमने 10% rise in CPR एक डिकेड में देखा, जो कि ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद अभी तक हुआ है, sadly. We have been trying to address the same challenge as technocrats even, using the same strategies. We've not been thinking out of the box, and I have to give credit to PSI for leading that in Pakistan. सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑडियंस लॉन्ग टर्म, अगर आप दूर की सोचते हैं और उन पे काम करना है तो आपको यूथ के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर योर फ्यूचर जनरेशंस, दे आर द वंस हु हैव टू टेक ऑन योर कंट्री। उन्होंने संभालनी है, उन्होंने चलानी है। We don't see youth engagement, which is very critical to making a dent into this particular sector, into addressing this challenge. मैं बैठती हूँ मीटिंग्स में, हमारे सेक्टर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठती हूँ, जहाँ पे हर कोई कह रहा होता है कि यूथ नीड्स टू बी इंगेज्ड, हमें यूथ के साथ काम करना चाहिए, यूथ वांट्स दिस, यूथ वांट्स दैट। एक यूथ नहीं बैठा होता वहाँ पे जो ये बता सके कि उसको चाहिए क्या, और वो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लेना चाहता है, उसके मसले हैं क्या, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे करें, क्या वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यही बच्चे हमें बताएंगे। पहला स्टेप जो हमने यूथ के साथ इंगेज करने के लिए किया, हमने मेक स्पेस हैकाथॉन किया। दैट वाज द फर्स्ट इंटरवेंशन दैट वी डिड विद यूथ, एंड वी गॉट रियली गुड रिस्पॉन्सेस, वी गॉट आइडियाज़, यू नो, यंग पीपल केम इन। अब हैकाथॉन का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से है कि आप रिक्रूट करते हैं लोग फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, दिस दैट और द अदर, दे कम एंड दे देन प्रेजेंट कि जी हमें कैसे लगता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो वो आए, उन्होंने आकर के अपने पिचेस दिए। शुरू में घबराहट होती है, बाद में थोड़े से सेंसिटाइज हो जाते हैं, एंड देन वी थॉट कि गेम्स तो हर बच्चा खेलता है, और गेम्स के थ्रू जो मैसेजिंग जा रही है ना, आप देखें बच्चों को कितनी चीज़ें हैं जिनसे सेंसिटाइज किया जाता है थ्रू गेम्स एंड कार्टून्स, सो मैनी थिंग्स। एविडेंस भरा पड़ा है, रिसर्च आप उठा करके करें, भरी पड़ी है रिसर्चेस। तो we thought let's do a game jam for this topic as well. On the first day I was pulled in by one of the mentors into a group, and who said that students over here who want to participate, who participated, are saying, who's picked this taboo topic?
how do we think about it, how we talk about it. There was shyness, they were very uncomfortable talking about it. I went there, I spoke to them, I told them this is precisely the reason why we want to gamify this topic, because it is not something that we can't talk about. Yes, we need to tweak it in a way that people are nowadays consuming information. And the journey from there, where I was called in by students, to sort of say that why was a taboo topic picked for a game jam and how difficult it was, how are they going to talk about it. To day one end, we saw all of these students, laptops open, researching about it, chat GPT चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं इसके बारे में, हमें बुला रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि we heard about this, we heard about that. One student I remember called and said, I just discovered that men can also have breast cancer. So, having that kind of conversations around menstrual cycles, etc. To day two, towards the end, a winner, one of the winners, our first position holder of this game jam were a brother and sister. So imagine the kind of conversation those brother and sister must have had on the topic to be able to come up with a game that impressed a large audience, judges. So I think that journey we saw in 2 days. That's the impact of normalizing the talk. That's how important it is.